So primarily we will be discussing how agriculture policy has evolved in India right from independence onwards. Second thing that we'll be doing is going into the question answers that are important on various subjects within the agriculture sector. So let's go to the agriculture policy evolution. This is a document from our class notes. So if any of you don't have it, please ask and I'll share it with you. So here it is. So this basically deals with what is the time period of a particular policy. अलग अलग decades में किन चीजों के ऊपर फोकस रहा, फिर उस टाइम पे एमिनेंट पॉलिसी इश्यूज क्या थे और क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स आया. सो जब देश आजाद होता है 1940s to 50s, तो उस टाइम पे कुछ बेसिक इश्यूज हैं, जस्ट लाइक अनऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल मार्केट्स, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स. इनफैक्ट जो एग्रीकल्चर मार्केट्स थी वो कोई ऐसा मंडियां नहीं होती थी जैसे आजकल एपीएमसी मंडीज हैं, ये सब बाद में आना शुरू हुआ. एंड स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स की बजाय जो फसलें थी, दे वुड बी जस्ट क्रिएटिंग अ हीप ऑफ whatever harvest they have, and then that heap is something that we would be checking whether it is working fine or not. उसका ग्रीन क्वालिटी क्या है, बस उतना देख के खरीद लेते थे. हीप के हिसाब से लाइक प्राइस होता था, ऐसे वेट्स मेजर्स कुछ नहीं करते. देन मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स बाय द ट्रेडर्स. तो फार्मर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो अकाउंट की मैनिपुलेशन करके आमतौर पे फार्मर को जो पैसे मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते थे आमतौर पे. देन लैक ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जैसे आज एफसीआई और ये सब के गोदाम हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी हमारे पास स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है. दिस डिड नॉट एग्जिस्ट बैक इन द डे. इनफैक्ट देन द ओनली ऑप्शन वाज कि जिस दिन आप मंडी में पहुंचे हो, जो फसल के भाव मिल रहे हैं उतने में बेच के वापस आ जाओ, नहीं तो पूरी फसल उठा के फिर वापस आओ, फिर लेके जाओ. दैट वुड क्रिएट ट्रबल. तो फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता था. देन देयर वाज फूड सप्लाई शॉर्टेजेस बीइंग हैंडल्ड थ्रू प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग. इंडिया में जो लास्ट फेमीन था वो 1944-42 इसके आसपास आता है, and that was also a man-made famine because Britishers, they introduced a lot of commercial agriculture in the form of commercial crops, and that also with plantation agriculture जैसे कि इंडिगो, टी, कॉफी. अब फूड ग्रेन को रिप्लेस कर दिया गया और ये सब कल्टीवेट करना शुरू किया गया, एंड दैट वाज लीडिंग टू फेमीन्स. तो अब जब देश आजाद होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फूड सिक्योरिटी की. अब हमने ऑल्दो यूएस के साथ एक पब्लिक लॉ 123 एग्रीमेंट ये तो किया, उसके 480 एग्रीमेंट सॉरी, उसके अंदर हमारे पास थोड़े बहुत अनाज आ जाता था. एटलीस्ट द व्हीट सप्लाईज वी वर इंश्योरिंग फ्रॉम यूएसए. वी वर नॉट हैविंग आवर ओन व्हीट टू फीड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. तो उसको राशनिंग, प्राइस कंट्रोल जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके थ्रू वर्कआउट करने की कोशिश की जाती थी. इट वाज एट अ वेरी इनिशियल स्टेज कि हम ये इस तरह की कमिटीज के थ्रू काम करते थे. अभी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना बाकी था. तो पॉलिसी रिस्पॉन्स कैसे आया? जो तो अनऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल मार्केट्स की प्रॉब्लम थी, उसके लिए एपीएमसी एस्टैब्लिश किए गए, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमिटी एक्ट्स. और क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने एपीएमसी एक्ट्स लेके आए, एंड दिस स्टार्टेड समवेयर इन 1950s एंड देयर आफ्टर सारे स्टेट्स में ये हो गया. देन केम द मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन. ये बेसिकली हेल्प कर रही थी इन टर्म्स ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ accounts and providing various kinds of facilities like storage infrastructure and all. तो फार्मर्स को क्रेडिट के तौर पे भी हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. नैफेड आज की डेट में देखा जाए तो उसका काम है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को प्रोक्योर करना. Then as far as lack of standardized weights and measures were concerned, so Bureau of Indian Standards Weights and Measures, formerly known as the Indian Standard Institution, this was set up in 1946. And ISI was registered under the Societies Act 1860. तो आज भी ISI मार्क एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन के तौर पर इंडिया में यूज होता है. As far as the storage infrastructure is concerned, so we created the Central Warehousing Corporation in 1957 to provide logistical support to the agriculture sector. Moreover, to deal with the food supply shortages, we, in the first 5-year plan, it focused immensely on agriculture because जरूरत थी उस टाइम पे फोकस करने की. फर्दर PL 480 एग्रीमेंट, इंडिया यूएस ने 1956 से लेके 70 तक फूड इंपोर्ट्स का एग्रीमेंट किया था.
1971 वॉर जब इंडिया पाक और ईस्ट पाकिस्तान की हुई एंड बांग्लादेश वॉर भी बोलते हैं, तो उसके बाद से हमने वीट इंपोर्ट करने वैसे ही बंद कर दी, क्योंकि 1965 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इट क्रिएटेड सफिशिएंट फूड सिक्योरिटी आल्सो. देन इंडियाज प्राइस पॉलिसी was first introduced in 1947. ये जो प्राइस कंट्रोल्स करने की बात है, with the formation of food grain price policy committee. तो ये जो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है या कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, ये सब बाद में आए हुए इंस्टीट्यूशंस. पहले देश आजाद होते ही जो फूड क्राइसिस था उसको सॉल्व करने के लिए ये किया, which recommended a policy of progressive decontrol, reduction of imports and food grains and substantial increase in production of food grains. तो धीरे धीरे वो कहते हैं कि पहले तो फुल कंट्रोल रखेंगे, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करे सारी की सारी फूड मार्केट को, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो भी वल्नरेबल है और कंज्यूमर भी वल्नरेबल. एसेंशली आज भी जो एमएसपी का सिस्टम है उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग क्या यूज होती है, दैट इन इंडिया देख लीजिए अपने पास, both producer and consumer in food sector are vulnerable. That's why it is important for government to intervene from time to time to address that vulnerability. Okay. अब 1960s से 70s के अंदर हमारा क्या वर्कआउट रहा? So 1960 से 70s में कंसर्न वाज फूड सोवरेनिटी एंड डिप्लोमेटिक सोवरेनिटी फॉर गवर्नमेंट. ये दोनों टॉपिक अब जुड़ गए. जुड़ने का कारण क्या है? 1971 वॉर के टाइम पे यूएस थ्रेटेंड कि मैं फूड सप्लाईज रोक दूंगा, जो आपके पास वीट आ रहा है, और हम जो PL480 एग्रीमेंट आपके साथ करके बैठे हैं, दैट विल स्टॉप. तो थ्रू आउट इवन 1965 में भी और उससे पहले भी इस तरह की थ्रेट्स आते रहे. तो 1971 में तो इट वाज एन अल्टीमेट थ्रेट जिसमें हमने भी रिस्पॉन्ड किया, चलो ठीक है रोक. लेकिन उससे पहले 1962, 65, एनी टाइम वी वुड हैव वॉर विद पाकिस्तान, दिस वुड बी अ मेजर चैलेंज प्लेड बाय यूएसए कि मैं फूड सप्लाईज इंडिया की कट कर दूंगा. वो एक डोर हमारी उन्होंने पकड़ के रखी थी. इफ यू रिमेंबर, पाकिस्तान इज अ कंट्री व्हिच जॉइंड नेटो थ्रू सेंटो. Yes. So that way it was always supporting Pakistan's military adventures anytime. So in India, these two issues got connected: food sovereignty and diplomatic sovereignty. So this was one concern. Second concern was food security for the people because they were vulnerable. Then food pricing. So at what price should the food be accessible in terms of selling as well as buying? So farmer or consumer दोनों के level पे food pricing. Then planning, promoting and financing programs for production, processing, marketing, storage, export, import of agricultural products, foodstuffs, certain other notified commodity through cooperatives और एक social forestry movement यहाँ पे शुरू होता है. तो ये सारे बेसिक कंसर्न्स हैं जो 60s और 70s में है. इसका पॉलिसी सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन दैट स्टार्टेड इन 1965. So high yielding variety of wheat, rice and coarse cereal. These were the three things. Within coarse cereals there is ज्वार, बाजरा and रागी. इन तीनों के ऊपर फोकस किया गया. Now कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस वो भी 1965 में एस्टैब्लिश किया गया, और जो एमएसपी का मैकेनिज्म है इंडिया में वो शुरू होता 1965 से, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन वुड प्रोड्यूस मोर. Now to handle that higher produce and to motivate people to adopt a certain kinds of produce, कि आप wheat पे ध्यान दीजिए या राइस पे ध्यान दीजिए, एमएसपी का सिस्टम डिजाइन किया गया. देन नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी. सो ये सारा जो प्रोमोटिंग, फाइनेंसिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब किया गया. एंड नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड. तो ये दो बॉडीज मिलके सारा प्लानिंग वाला वर्कआउट कर रहे थे. तो 1976 में MS स्वामीनाथन के तहत ही नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सेट होता है. इसी को फार्मर कमीशन भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट 1970s एंड 80s. तो फर्स्ट इशू वाज एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड सेकंड इशू वाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इन द स्ट्रक्चरल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन. कौन ध्यान देगा उसके ऊपर? एग्रीकल्चर फाइनेंस की क्यों जरूरत पड़ रही थी? 1965 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया, तो वो जो सारे अलग अलग इनपुट्स हैं,
हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है और इरिगेशन है, अश्योर्ड इरिगेशन होना चाहिए। उन सब चीजों के लिए इनपुट के लेवल पे कैपिटल चाहिए था, इसलिए रीजनल रूरल बैंक्स की शुरुआत की गई कैपिटल देने के लिए, नहीं तो मनी लेंडर ट्रैप में चले जाते और हर कोई कर नहीं पाता। साथ ही साथ नबार्ड को वर्कआउट किया गया, सो इट विल टेक अ लीड रोल इन डेवलपिंग दी एग्रीकल्चरल फाइनेंस. फिर as far as the agricultural export institutions are concerned, so we created APEDA, Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority 1985. So ये APEDA आज भी सारी चीजें कंट्रोल करता है. अब ये एक्सपोर्ट की बात अब हम क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज 80s तक आते आते वी हैड सफिशिएंट फूड एंड वी हैड मार्केटेबल सरप्लस फॉर द इंटरनेशनल मार्केट आल्सो, so that's where we want to be a part of. Now 1990s to 2000s, so here the functional part of agricultural export was to be explored. Concern is अपेडा तो है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे छोटे इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए जो एक्चुअल में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा फॉर दैट पर्पस, मे बी प्राइवेट सेक्टर डज द इन्वेस्टमेंट, और अपेडा उनको पॉलिसी सपोर्ट देगा. इसलिए concept of agricultural export zones was initiated by the government of India in the year 2001 under chapter 16 of then EXIM policy. उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं बोलते थे, EXIM पॉलिसी बोलते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी. एक और इशू जो यहाँ पे शुरू हुआ वो था लिबरलाइजेशन. अब 1991 में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो पढ़ते हैं कि नया आया और उसने लिबरलाइजेशन किया, लेकिन एग्रीकल्चर में लिबरलाइजेशन अभी भी नहीं हुआ. कारण क्या है, अभी भी गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता है इन ऑल रिस्पेक्ट्स, वेदर इट इज द प्राइसिंग एंड एवरीथिंग, प्रोक्योरमेंट. सो ऑल दिस वेंट ऑन टिल 2000. अब हमने थोड़ा सा एग्रीकल्चरल लिबरलाइजेशन के बारे में सोचना शुरू किया था, द 3 फार्म लॉज, तो बट उसमें एक्सेप्टेंस क्रिएट नहीं हो पाया. Now there are level 2 reforms. These are 21st century reforms that are happening from 2000 to 2002. At a general level, we have something called as the National Policy for Farmers 2007. इसके broad objectives पेपर के लिए जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि ये आज भी फंक्शनल है. आप मेंस में कभी भी आंसर राइटिंग करो तो उस आंसर में एग्रीकल्चर की ये पॉलिसी लिखना जरूरी है. 1 नंबर आधा नंबर आपका जरूर बढ़ जाएगा अगर आप ये लिख दोगे वहां. Then comes land. So National Land Record Modernization Program was started in 2008. ये बेसिकली डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का एक वर्कआउट है. आज भी इसका एक न्यू वर्जन चल रहा है. सो भूमि के लिए आपके पास कार्ड बनेगा, आधार. उसका क्या नाम है? व्हाट इज द भूमि आधार नेम एक्चुअली? सेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ भूमि आधार? बेसिकली मोदी जी लॉन्च दिस पर्टिकुलर थिंग, भूमि आधार. तो उसके अंदर कंसर्न ये है कि जो टाइटल्स हैं लैंड रिकॉर्ड्स के, वो लीगल टाइटल्स बनने चाहिए और कंक्लूसिव टाइटल्स बनने चाहिए. अभी हमारे ऐसे सोच लेते हैं कि यू नो दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रिजम्पटिव टाइटल्स, नॉट कंक्लूसिव टाइटल्स. उनको खत्म करना है. तो इस वजह से भू आधार, ये भूमि आधार या भू आधार वो उन्होंने शुरू किया था. तो ये यहाँ पे अपने पास नोट कर लीजिए. तो भू आधार, अगर इसका टेक्निकल नेम जानना है तो दैट इज ULIPIN. सो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर. यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो इसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है. लेट मी शो यू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वर्कआउट ऑन दिस. Just give me one moment. That will refresh your memory. This is going to be important this year. 2023 मार्च में शुरू हुआ सारा वर्कआउट इसका. तो सिटीजन सेंट्रिक भू आधार विल रिवोल्यूशनाइज गवर्नेंस ऑफ साक्षात भारत. So National Conference on Bhumi Samvad 4 on implementation of unique land parcel identification number or Bhu Aadhaar, organized with the theme of digitizing and geo-referencing India with Bhu Aadhaar. That's what was started.
So what they want to do in this project is this is the basic implementation of land records digitization only. The one thing that it will make different is जो उसमें नहीं था वो ये कि अब ये लीगल टाइटल्स बनेंगे, कंक्लूसिव टाइटल्स बनेंगे, प्रिजम्पटिव नहीं होंगे. See, the GDP loss of the country's economy is about 1.3% due to the projects being stalled over litigation involving land disputes. जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, 70% केसेस यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट या लैंड के साथ. स्टडी से 66% of all civil suits in India are related to land and property disputes and the average pendency is 20 years. So ये प्रॉब्लम है और ये इसके पीछे कारण क्या है? क्लियर टाइटल्स नहीं. देखिए नेक्स्ट. Now Department of Land Resources Shri Ajay Trike, he says the computerization of land registration is 94% complete, जो 2008 में प्रोग्राम शुरू किया था, and 9 crore land parcels now have भू आधार. Transliteration of land records will be available in 22 languages in near future, facilitating citizens of the country. The Bhu Aadhaar will be a move towards the government's agenda of citizen-centric governance and reaching $5 trillion economy. Land is a basic deal to go through that. Now, what else? 26 states के अंदर इसको implement किया गया है फिलहाल. And that by March 2024, that means by next year, department targets achievement of 100% land records under Bhu Aadhaar. So this ULPIN number सारे land parcels को मिल जाएगा. इसमें aerial survey है, geo referencing है, geographical information system है, सारी technology use करके हम भू आधार create करें. ठीक है. So add this to your workout. I'll share this link with you in the WhatsApp group so that it is easier for you to monitor and add to your notes. Okay. Get the shared. Now moving back to our workout. और लेटेस्ट क्या चल रहा है साथ के साथ अपडेट कर लो, ठीक रहेगा आपके लिए, ताकि इधर उधर से ढूंढना ना पड़े सामान. मॉडल लैंड लीजिंग लॉ 2016. अब ये भी एक तरह से लैंड रिफॉर्म के साथ एसोसिएटेड वर्कआउट है जो अभी चल रहा है. दिस इज यू शुड कंसिडर समथिंग लाइक अ फेज 2 ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. यस, ये सक्सेसफुल है. फेज 1 तो अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि वो तो 6% ऑफ लैंड के ऊपर ही एप्लीकेबल हो पाए थे, आपको याद. सो मॉडल लैंड लीजिंग लॉ के अंदर करना क्या चाहते हैं, हमारे ओरल लीज के बेसिस पे काम चलता है क्योंकि रिटर्न लीज का कोई सिस्टम ही नहीं था इंडिया में. बहुत सारे स्टेट्स इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज इससे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं. सिर्फ कुछ कंडीशंस के अंदर ही लैंड लीजिंग कुछ स्टेट्स में अलाउड थी. तो नीति आयोग ने मॉडल लैंड लीजिंग लॉ देने के पीछे कारण क्या है कि बाकी स्टेट्स इनको अपने हिसाब से अडेप्ट कर लें, अगेन बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. तो अगर ऐसा लीगल मैकेनिज्म होगा तो वो जो ठेके पे जमीन देना है वो आसान रहेगा और उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी, लीगल मैकेनिज्म के अंदर ही सेटलमेंट्स भी हो जाएंगी. Then there is right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement. अभी भी ये एक्ट 2013 में इनिशिएट तो किया गया लेकिन इसकी अमेंडमेंट पेंडिंग है. ये एक्सेप्टेंस इसकी नहीं बन पाई है बहुत सारा. So these are the 3 things we did with respect to land reforms in the last about 20-22 years. Then as far as agri markets are concerned, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे मॉडल एपीएमसी एक्ट्स आए हैं, एक 2003 में, एक 2017 में. जो 2017 का एक्ट है वो लाइव स्टॉक के ऊपर भी बात करता है, तो इट इज दैट्स व्हाई कॉल्ड एज एपीएलएमसी एक्ट. जो ईनैम है दैट स्टार्टेड इन 2016, दैट इज अनदर एग्री मार्केट रिफॉर्म. यू ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इट इज. एंड मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018, सो दिस वाज गिवन बाय नीति आयोग. अगेन बेसिक पर्पसेस की जो छोटे फार्मर्स हैं वो अगर प्राइवेट बिजनेसेस के साथ, बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ, फूड सप्लाई चेन्स के साथ टाई अप करते हैं तो उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल क्या होना चाहिए, और वो हर स्टेट अपने हिसाब से उसमें प्रोटेक्टिव चीजें डाल के इंस्टीट्यूट कर सकता है. देन विद रिस्पेक्ट टू एग्री मार्केट 3 फार्म लॉज वर देयर व्हिच आर नाउ रिपील्ड. सो अब इस पे क्वेश्चन आ लिया जो आना था, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी. आई डोंट थिंक कि इस बार आप फार्म लॉस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन हमने क्वेश्चन आंसर्स में फिर भी वो क्वेश्चन दिए हैं. देन एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी. सो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम एक नीति आयोग ने 2016 में सजेशन दिया था, उसको आपने अभी जो एग्रीकल्चर की रिपोर्ट हमने पढ़ी
तो उसके अंदर आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया कि व्हाट इट इज, हाउ इट विल बी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड. Then what are the parallel developments? So we are trying to improve forward backward linkages within the agriculture, and for this there are various government schemes. जैसे आप देखेंगे कि लाइव स्टॉक के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, मत्स्य संपदा योजना है, मेगा फूड पार्क की स्कीम है. ये सारी स्कीम्स नेशनल और स्टेट लेवल पे चलती हैं, जो कि एसेंशियली फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस जो आपने एग्रीकल्चर में पढ़ी थी उनको इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल किसी न किसी लेवल पे. So this is the overall policy evolution in agriculture. I think this document will help you create a perspective for answer writing whenever you are to do so in mains. Now moving to the next area, that is the question answers, so to speak, जितने हमारे agriculture के area में आते हैं. Give me one moment. Here we are. So growth and development, monetary. I hope ये questions आपने पढ़ लिए और इनके ऊपर आंसर्स लिखने शुरू कर दिए. Now agriculture. एक चीज जो इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो उस वजह से क्वेश्चंस बनेंगे. सो मिलेट प्रोडक्शन कम्स विद अ लॉट ऑफ हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स. डिस्कस इज अ जनरल क्वेश्चन ऑन मिलेट्स अगर आएगा तो. So millet is a collective term referring number of small seeded annual grasses. They are cultivated as green crops primarily on marginal lands in dry areas in temperate subtropical and ट्रॉपिकल रीजन्स. तो करीब करीब सब जगह ही जहां जहां भी ड्राई एरियाज की अवेलेबिलिटी है उधर मिलेट्स की कल्टीवेशन पॉसिबल है. इज द वर्ड फाइल प्रॉपर्ली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay. Now some of the common millets available in India are ragi, jowar, sama, bajra, and variga. So many are there. Just remember 2 or 3. Jowar, bajra, ragi, they are the famous ones. Now, India is the largest producer of millet in the world. It accounts for 20% of global production and 80% of Asia's production. उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी लेकिन स्कोप बहुत है हमारे पास इसको प्रोड्यूस करने का. Now it is why it is significant. So nutritionally it is superior. एक दो points याद रख लो. Superior to wheat and rice. Why? Because of high protein, fiber, vitamins and minerals like iron content. फिर भी हम क्यों नहीं डाइट में लेके आते? क्योंकि थोड़ा कोर्स होता है, रोटी ना उतनी सॉफ्ट नहीं बनती, बस उस चक्कर में, टेस्ट के चक्कर में कह लीजिए कुछ भी. सो वी अवॉइड दिस. नाउ मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. दे प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड शील्ड अगेंस्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसको हम साइलेंट हंगर बोलते हैं एक तरह से. देन ग्लूटेन फ्री एंड अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. So they tackle lifestyle problems and health challenges such as obesity and diabetes because they are gluten-free and have a low glycemic index. Basically, a relative ranking of carbohydrate in food according to how they affect the blood glucose levels. Abhi jo high yielding variety of wheat and rice hai na, they have a very high glycemic index also. Same goes with corn, corn flakes, corn in any form. Very high glycemic index. So they raise the blood sugar levels like anything. Remember, these products were created back in 1960s when we needed more hands on deck. Hands on deck means आपको लेबर चाहिए होती थी जो कि सारा दिन रात काम करती रहे, एक बार 2 बार खाना खाए. तो अगर तो लोगों का लाइफस्टाइल वैसा है, ज्यादातर वो खेती बाड़ी में या इंडस्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, फिर तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आर फाइन. तो 1960s के फूड्स हैं, ठीक है. लेकिन आपको अगर लेबर चाहिए जो ज्यादातर दिमाग से काम ले रहे, हाथों से कम काम ले रहे, तो फिर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड चाहिए जो कि मिलेट्स हैं, ठीक है. क्योंकि अभी तो सारी इंडस्ट्री सर्विसेज बेस्ड है, तो दिमाग से काम ज्यादा ले रहे हैं. फाइन. बैक इन द डे इफ यू कंसिडर व्हेन देयर वाज ऋषि मुनि वाला टाइम, उस टाइम पे भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड चाहिए होते थे बिकॉज दिमाग से काम ले रहे थे, ठीक है. एग्रीकल्चर था थोड़ा था, लेकिन इतना सब्सिस्टेंस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर होता था, कमर्शलाइज्ड नहीं था, ठीक है. तो इस वजह से अब दोबारा से फिर even if we are going for agriculture, but we are in a service sector industry which is leading the way forward today. So low GI foods. Then super crop at growing. So millets are photo insensitive. That means they do not require too much light or anything for flowering, and they are resilient to climate change. So they can grow on poor soils with little or no external inputs, and they are less water consuming
and they are capable of growing in drought conditions, and they have a low carbon and water footprints. So for example, rice plants needs at least 3 times more water in comparison to growing of millets. तो अच्छा है इस हिसाब से। बस हमें अपनी थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत है, थोड़े दांतों से काम ज्यादा लेने की जरूरत है, क्योंकि ज्वार बाजरा रागी थोड़ा चबाना ज्यादा पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, you have to chew it a little more. Okay. Now, what are organic fertilizers and how can they benefit Indian agriculture? So organic fertilizer कौन से हैं जो organic sources से driven हो, such as compost, cattle manures, poultry droppings, domestic sewage, so everything. आजकल तो कितनी सारी वीडियोस आती रहती है ना, किचन वेस्ट को पानी में डाल के रख दो, फिर वो उसको फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर लो, लाइक दिस. Then further, they can be categorized into two segments. First is biofertilizers, and then there are organic manure. So biofertilizer क्या है? They are composed of living organisms. So they don't have like vegetable matter or decomposed matter, living organisms. So as you know, earthworms, so they can definitely create biofertilization. Yes. Now, apart from that, there are various bacteria such as rhizobium, then azotobacter. ये दो याद रखो बहुत है. Blue green algae, easy to remember things. Then organic manure. So this is basically partially decomposed organic matter, like be digested from the biogas plant or compost or vermicompost. So they have rich nutrients. Then potential of organic fertilizer in India. हमारे यहाँ पे market कैसा है? First is utilizing the municipal solid waste. So we got 150,000 tons of municipal solid waste every year. Okay. So that way we can definitely use it for organic harvest, organic manure. Then consider the collection efficiency of 80%, organic part of MSW to be 50%. So what we get is around 65,000 tons per day, sorry, not per year. Even if half of this is diverted towards the biogas industry, government can leverage this, reducing an import of fossil fuels and fertilizer. लेकिन बस इसका सिस्टम बनाने की जरूरत है. Then utilizing biogas effluents. So there is also great value of organic fertilizer, also known as digestate, which is the biogas plant's effluent. So biogas निकलने के बाद जो बाकी बचते. Further, biogas can be utilized for heating, electricity, and vehicular purposes. So, and digestate can help in the green revolution or second green revolution. Then increasing soil fertility. Now, digestate can provide organic carbon to continuously depleting soil apart from its standard nutrition value. So in India at present, biofertilizer production is just over 110,000 tons. ये साल की प्रोडक्शन है. हम इससे ज्यादा 2 दिन में कर सकते हैं अगर हम उसको ठीक से यूटिलाइज करें तो. ऊपर बढ़ा ना 65,000 टन की डेली अवेलेबिलिटी. Now there has been significant rise in organic farming sector due to growing awareness about the harmful effect of synthetic fertilizer on the soil, rising health concerns, expanding urban population base, and increased consumer expenditure on food grains. Now, further, they have the potential to eliminate the usage of synthetic fertilizers completely. Over a period of time, like I said, fertilizer industry, it started with war industry coming out of Second World War. So extra चीजें जो पड़ी थी उनको यूज किया गया. Now, despite being the second largest producer of tea globally, there are challenges faced by the tea industry in India. Highlight some of the government initiatives to promoting the growth of tea industry. So India is the second largest producer of tea globally. Northern part of India is the biggest producer at about 83% of the country's annual tea production. And there also Assam and West Bengal. That's the majority of tea gardens there. In South, you got Tamil Nadu, Kerala, Karnataka producing the rest of 17%. And today we make 10% of the total exports. So that's a big market for us. What are the challenges? So tea prices have started declining according to World Bank report. Why? So no proper steps were taken to improvise the quality of tea being produced in India, or to raise the price margins, as the profits were often used for something else and not for the tea gardens. तो क्वालिटी के ऊपर वर्कआउट ज्यादा नहीं किया गया, इस वजह से प्राइसेस डिक्लाइन करते हैं. नेक्स्ट, लेस प्रोडक्शन. So it is facing number of problems such as financial, power, labor,
More labor schemes, inadequate communication system, increased pollution fee, less subsidy for transport, and so on. This kind of situation have put tea industry in Northeast India in a hopeless situation, resulting in low production of tea and tea leaves. इसीलिए आप टी के प्राइसेस अगर देखो पिछले 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए. जो टी 400 रुपीज अ केजी हुआ करता था ताजमहल एंड ऑल, नाउ इट इज सेलिंग एट 600 रुपीज अ केजी. Almost 1.5 times the price have increased. Next is climatic conditions. So if the climate conditions are unfavorable for tea production, owing to less or heavy rainfall, दोनों तरफ ही, that also poses severe problem affecting the production of tea and lives of the tea industry labor. And there is pest problem. So bacterial black spots is a disease which spreads and spoils tea leaves, and northeast में ये एक major disease अभी हो रहा है. Then low wages of laborers. आमतौर पे यहाँ पे माइग्रेटरी और इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं बांग्लादेश से जो आते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो उनको कुछ खास मिलता नहीं. ठीक है. So usually the wages paid for tea industry labor are very less. This made some of them starve and leave out the industry. वो ऊपर छोड़ के चले जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं. Quality deterioration. So as importance is given only to the production increase and not for quality improvement, Indian tea, known for its superior taste, may lose its market in the international arena if the quality is not taken care of. So if you today want good quality tea, you also need to have affordability segment there. So दोनों चीजें चाहिए साथ साथ में. तो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों चाहिए. हम सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पे नहीं कर रहे. अब गवर्नमेंट की इसमें क्या इनिशिएटिव्स हैं? Promotion of packaged tea of Indian origin. So there are schemes which provide assistance for promotional campaigns up to 25% cost reimbursement, display in international departmental stores, product literature, website development, inspection charges reimbursement up to 25% of the charges. So basically government help कर रही है टी को promote करने में. Subsidies for domestic exporters. So the tea board also provides subsidies to domestic exporters to participate in international fairs and exhibitions. Tea development and promotion scheme. So November 2021 में launch हुआ था, और this is going to go on for 2021 to 2026. What it wants to do is enhance productivity and quality. That's the focus. So that's it about the tea industry. अभी किसी एग्जामिनर को चाय अच्छी लगती है तो फिर वो पूछ सकता है ना. टी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, इस तरह से ना कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो टाइम टू टाइम रेलेवेंट रहती हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं. पूछा भी गया यूपीएससी के अंदर. Now, what are the main challenges facing India's agriculture sector and what policies are being implemented to address these challenges? It's a very broad question. The reason for keeping this question is that any issue can be dealt with. And so it's like a potato question. इसमें से जो points आप पढ़ोगे वो इधर उधर सब जगह यूज हो जाएंगे. So India is an agricultural based country where more than half of the population is engaged in farming activities, contributing to the country's GDP. इसके figures आपके पास हैं तो मैंने यहाँ पे replicate नहीं किए. तो challenges क्या हैं देखिए. Now challenges faced by the India's agriculture sector. First is declining soil fertility. So India's agriculture is heavily dependent upon soil health, and declining soil fertility is a major challenge. अभी soil health के लिए, for example, Jaggi Vasudev run across countries trying to promote soil health. No? Okay. Now, water scarcity. So India is a water-stressed country, and only 4% of world's fresh water is available to 17% of the world population. Okay. Then fragmented land holdings. ज़्यादातर हमारे जो farmers हैं, they are having marginal land, so that's less than 1 hectare. इस वजह से ट्रबल रहता है. 84% of farmers today have land less than 2 hectares in India. Then low productivity. So per hectare yield जो है इंडिया में बहुत कम है. चाइना के कंपैरिजन में देखिए, यूएस के कंपैरिजन में देखिए. Then lack of access to technology and markets. So क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सफर करता है, तो इस वजह से टेक्नोलॉजिकल एक्सेस लिमिटेड रहेगा. मार्केट्स के लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी. Then there is of course climate change. So that is affecting every country's agricultural productivity. So may it be droughts, flood, cyclones, poor rainfall, erraticness of monsoon.
So all that factors associated with challenges. A policy is implemented to address these challenges. So at the level of irrigation, government is trying to increase the investment through Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, trying to work on the groundwater through Atal Bhujal Yojana, and now we got a Ministry of Jal Shakti also, usko bhi chahiye yahin likh do, for a more focused approach. वो भी ऐड कर लो यहाँ पे, ठीक है. Then promoting crop diversification. So we got Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Rashtriya Krishi Vikas Yojana. They want to promote crop diversification, both of them. जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर आप जाओगे तो 5% प्रीमियम पे आप रिस्क ले सकते हो डाइवर्सिफाई करने का. इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर. सो देयर इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड ईनाम. एक तो रूरल कनेक्टिविटी और दूसरा मार्केट, दो लेवल पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं. देन प्रोवाइडिंग सब्सिडीज इन द फॉर्म ऑफ inputs for seeds, fertilizers, and irrigation equipment. So this will reduce the cost of cultivation for the farmers. So उसके ऊपर काम चल रहा है. Introduction of technology-based solutions. So PM Kisan is there. So उसमें basically solar-powered water pumps दे रहे हैं हम. And similarly, Kisan credit card is there. So through that, definitely we can increase the technological input. So all these areas, government is trying one way or the other to help the Indian agriculture sector. तो ये schemes का एक broad analysis इस तरह से याद रखना अपने पास. Then what are the main challenges facing production, distribution and marketing of agriculture products in India? And ये basically forward link जिसके ऊपर है. How can they be addressed to ensure sustainable and inclusive growth in agriculture sector? तो फिर से कुछ statistics हैं. 54% of the country's land classified as arable, and the agriculture industry comprising half of the labor market. करीब करीब हमारे 50% लोग तो आज भी agriculture में हैं. It is one of the most important industries in Indian economy. In terms of employment, it is 151 million people. So that is indirectly, directly 60% of the population and contributing 18 to 20% of the GDP. So time to time change होता रहता है, लेकिन रहता है इसी segment. However, there are certain challenges in production, distribution, and marketing, such as production level challenges. First is dependence upon monsoon for irrigation. अभी भी 50% हमारा monsoon dependent है, ठीक है. Then inadequate access to credit and technology. So despite we having so many institutions being created, yet there are troubles because the interest rates are high and there is a lack of collateral with the farmers. Or supposedly there is a small and marginal farmer, उसके लिए तो ये और भी troublesome रहता है. Additionally, access to modern technology such as irrigation system, high-yielding seed varieties, and modern farm machinery that is lagging in India. Then there is poor infrastructure. Transport है, चाहे market linkage है, चाहे electricity है, सब चीजों में poor infrastructure है. अभी आप irrigation भी देख रहे हो, flood management कितना अच्छा हो रहा है इंडिया में, ठीक है. Now, inefficient use of natural resources. So India's agriculture is plagued by inefficient use of natural resources such as water and land. So this leads to water scarcity, soil degradation, reduced agriculture productivity. तो सीधे सीधे challenges हैं production के साथ associated. Distribution challenges क्या हैं? Transport infrastructure में कमी है, ज़्यादातर road dependence है, लेकिन roads और highways की connectivity rural areas में इतनी अच्छी नहीं है. Lack of proper storage and refrigeration facilities. कुछ states में तो बहुत अच्छी है, जैसे पंजाब में, क्योंकि यहाँ पे पूरा FCI का नेटवर्क है, लेकिन बाकी states में नहीं है. South में, East में, it's a problem. Moreover, due to high temperatures in many parts of India, perishable products like fruits and vegetables often spoil quickly. So you need refrigeration facilities which are very less. Refrigerated transportation which is even less. Then exploitation of farmer by middlemen. So intermediation की वजह से भी farmer को जो market price है वो fully realizable नहीं होता. फिर marketing के challenges क्या हैं? Inefficient marketing channels. So we've got APMCs which are inefficient. Organized marketplaces की आज भी कमी है इंडिया में. Infrastructure की कमी है इन मंडियों के अंदर. आज भी अनाज गीला हो जाता है, कभी बारिश आती है तो sheds sufficient नहीं है. फिर पक्के मैदान नहीं है सारी मंडियों में sufficient amount में, कुछ ही बनाए गए हैं. तो अगर वो पक्के मैदान होंगे, शेड्स होंगे, तो फसल खराब होने के चांसेस कम रहते हैं. Poor price discovery mechanism. So although ENAM is there, Agmark Net is there, yet जो मंडी में भाव तय होता है वो ट्रेडर्स की मर्जी से ज्यादा होता है.
और इंस्पेक्टर्स की मिली भगत से हो जाता है। तो farmers are generally unaware of the prices prevailing in the market, and intermediaries use this to their advantage by offering lower prices. So despite ENAM, despite whatever, कम अभी उसका इम्पैक्ट आने को देखते हैं। अगले 5-7 साल में थोड़ा बेटर हो सकता है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। Lack of information. So with respect to market trends, pricing, consumer preferences. So ना ही तो कभी कभी इंफॉर्मेशन की लैग है और कभी कभी इंफॉर्मेशन अडेप्टेशन की भी लैग है। पता होता है फार्मर को कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स महंगे बिकेंगे, लेकिन वो अडेप्ट करना मुश्किल है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए ना, फिर सेल के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए, सब चीजों के लिए, प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए। तो इस वजह से कम उसमें काम कर। Steps needs to be taken to address the issue. So we need to improve irrigation infrastructure, transportation, and create a more efficient marketing system. So these are the 3 basic things that we need to work upon right now. So next, what are the farmer producer organizations? अब जैसे 10,000 FPOs बनाने की बात की गई थी बजट में। How do they ensure forward backward linkages in the food processing industry? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट का, यूपीएससी का फेवरेट टास्क है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है। और एफपीओ इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये एक एड ऑन क्वेश्चन। So FPO is an entity formed by primary producers such as farmers, milk producer, fishermen, weavers, rural artisan, craftsmen, सब मिलके बना सकते हैं farmer producer organizations. Now an FPO can be a producer company, a cooperative society, or other legal form which provides for sharing of profits and benefits amongst members. So ये core task है, sharing of profits and benefits. Concept is to bring together producers, particularly small and marginal farmers, in order to form an effective tool for improved access to investment. So essentially एग्रीकल्चर में जैसे इन्वेस्टमेंट की कमी रहती है तो इन्वेस्टमेंट, सिमिलरली टेक्नोलॉजी हर कोई नहीं खरीद सकता, तो ये कर सकते हैं एटलीस्ट की शेयरिंग कैन बी देयर। फर्टिलाइजर, सीड्स, मार्केट, सब चीजों की शेयरिंग हो सकती है। FPOs can register themselves under the special provisions of the Companies Act 1956. तो उनके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है to register as an FPO. The main aim of an FPO is to ensure better income for the producers through an organization of their own. खुद की एक organization. So small producers do not have large marketable surplus individually, but to get the benefit of economies of scale. Also in agriculture marketing, there is a long chain of intermediaries who very often work non-transparently, leading to the situation where the producers receive only a small part of the value that the ultimate user or consumer pays. So this is something called as information asymmetry. This is something that works to the advantage of the intermediaries and not the farmers or the consumers. आपको क्या लगता है, आज अगर आप 200 रुपए किलो भी टमाटर खरीद रहे हो तो फार्मर थोड़ी बेचारा 200 रुपए किलो कमा रहा है, नॉट एट ऑल। उसको तो वही पैसे मिल रहे होंगे जो पहले मिलेंगे, तो ट्रेडर्स कमा रहे हैं बाय कंट्रोलिंग दी सप्लाई। उनको मौका मिल गया कि मानसून आएगा, बारिश में हम बोलेंगे टमाटर जी अब महंगा हो गया, और न्यूज में तो बात फिर फैली जाती है, अपने आप ही सब ट्रेडर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना शुरू कर देते। फार्मर्स ने तो वो अपनी फसल कब की काट के बेच के फ्री हो गए वो टमाटर, और उन्होंने तो वही 20 रुपए 10 रुपए बस उसी लेवल पे बेची। अभी जो प्राइस रियलाइजेशन है वो सारी इंटरमीडिएट्स के बेसिस पे होती, वही कमा रहे हैं दुकानदारी। ये दुकानदार कब से स्टॉक कर रहे हैं टमाटर मालूम, पिछले 2 महीने से, जो आज बेच रहा हूँ। स्टॉक भी कहाँ करते हैं, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स के अंदर। वेरी ऑर्गेनाइज्ड नाउ, एनीवेयर एंड एवरीवेयर। द सेम टोमेटो इट्स बीइंग सोल्ड which they bought for 20 rupees a kg at 200 rupees a kg. तो प्रॉफिट ग्रीडफ्लेशन जो है ना वो यहाँ से दिखती है। Now, FPO can help create value across different post-harvest phases, including harvesting, primary processing, storage, secondary processing, and market linkages. तो सारे लेवल से FPO काम कर सकता है. It ensures that all benefits of the value chain are retained by small farm group of small farmers. So FPOs have emerged as the most appropriate institutional form around the world, which to mobilize farmers and build their capacity to collectively leverage their production and marketing strength. अकेला farmer ये सब नहीं कर सकता ना, तो सब मिलके कर सकते हैं. Now, through FPOs, the farmers have made a shift from production-oriented agriculture to market-oriented agriculture, thus, trying to work without intermediaries and become agripreneurs by themselves.
In India, agriculture is the only one industry where the producer does not get to decide the price of the product, especially for the 23 commodities which are regulated under APMC. So most of the time, the price of the product is determined either by the government or by the market demand and supply. Sometimes there is a crisis of surplus. अब टमाटर ही ये टाइम भी मैंने देखा कि सड़क पे फेंकने की बात होती है, ₹2 किलो भी नहीं बिक रहे होते फार्मर्स, बेचारे इनको फेंक के चले जाए. Same goes with potatoes. When new potato comes, the cold storage people, they throw the older one on the street क्योंकि उसको उठा के ले जाओ या गाय भैंस खा ले या कूड़े में चले जाए. That's the situation. That's the crisis of surplus from time to time. But when there is something like this, when there is a phase when such like monsoon or some kind of disruption takes place in transportation, or maybe when fuel-based inflation is there, petrol, diesel की prices बढ़ गई, तब ये सब के prices भी बढ़ जाए, like this. So ensuring backward linkages in food processing industry. So FPOs इसमें क्या काम कर सकते हैं? Farmers cannot get adequate price for their produce without the value addition, and FPOs bridge the gap between producers' expertise and marketing of the product. Cost of production can be reduced by procuring all necessary inputs in bulk at wholesale rates. Aggregation of produce and bulk transport reduces the marketing cost, thus enhancing the net income of the producer. क्योंकि जो इंटरमीडियरीज हैं वो करते क्या हैं? दे आर एग्रीगेटर्स, वो सबका इकट्ठा खरीद के फिर बेचते हैं उसको, तो उनको कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन और हर लेवल पे कट जाता है. Building the scale through produce aggregation enables to take advantage of economy of scale and attracts traders to collect produce at farm rate. इकट्ठा प्रोड्यूस एक जगह से सबको मिल जाए, जो एग्रीगेटर्स हैं या जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो उनके लिए भी फायदा है. Access to modern technology, facilitation of capacity building, extension of training on production technologies, ensuring traceability of agricultural produce. ये सारी चीजें एफपीओ के थ्रू कर सकते हैं. ट्रेसेबिलिटी का कंसर्न होता है एक लिनिएज ट्रेस करना कि हाँ जी ये कहाँ से आया प्रोड्यूस, लाइक शिमला एप्पल, किन्नौर एप्पल ऐसे करके बेचते हैं ना, वो ट्रेसेबिलिटी के ऊपर. Post harvest losses can be minimized through value addition and efficient management of the value chain. This help in primary processing like drying, cleaning, grading, etc. तो ये सारी चीजें जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ एफपीओस कर सकते हैं. Forward linkages means selling the thing. So FPO members are able to leverage collection strength and bargaining power to access financial and non-financial inputs and services and appropriate technologies, reduce transaction costs, tap high-value market, and enter into partnership with private entities like Adani, Reliance, and so on, on more equitable terms. So FPOs जो हैं वो bargain कर सकते हैं क्योंकि उनके पास produce है, वो बड़े sellers के साथ, retailers के साथ bargain कर सकते हैं. Collective strength empowers farmers. Basically, FPOs are nothing but a collective strength, collective bargaining strength, collective selling strength, to integrate their individual marketable surplus to get benefits of the economy of scale. So farmers can connect directly with the customer, benefiting the customer and give farmers a better price, thus creating a sustainable space for agriculture. जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में ना आज भी फार्मर्स मार्केट्स होती हैं बहुत अच्छे, हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है. तो फार्मर्स मार्केट में क्या है कि हर हफ्ते फार्मर अपने प्रोड्यूस लेके आएंगे और अपने अपने प्रोड्यूस बेचेंगे, कोई ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है लिखा होगा वहां. तो अभी हमारे यहाँ पे मंडियां हैं, डायरेक्ट फार्मर नहीं सेल करते. तो मंडी में क्या होता है, सब्जी मंडी है कहीं पे हर छोटे बड़े शहर में लगते हैं, चाहे चंडीगढ़ है चाहे दिल्ली है चाहे जहाँ पे भी, वहां पे सारी इंटरमीडियरी ज्यादा है, फार्मर्स बहुत कम. तो वो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स मार्केट्स या एफपीओस के थ्रू इनको बेटर किया जा सकता है. नाउ फॉर एग्जांपल मोहाली में ना इन्होंने बहुत अच्छी मार्केट एस्टैब्लिश किया इन पंजाब विद रिस्पेक्ट टू एफपीओस कि वो खुद डायरेक्ट सेल करें, लेकिन वहां पे कोई खरीदने नहीं जाता, तो फिर वो फार्मर्स भी आना बंद हो गए, अब खाली रहता. एयर कंडीशनड एवरीथिंग दे गेव, बट infrastructure did not do because the consumer also has to shift the space. Okay. Now, regular supply of produce and quality control is possible through proper planning, management. Price fluctuation can be managed if there are practices like contract farming and agreements. So FPOs make communication easier for dissemination of information about price, volume, and other farmers or farming related advisories. So they can help in getting access to financial resources against the stock without collaterals,
and they can help generate fund from government, donors, service providers, and so on. So that way, they can streamline the market end of the agriculture also, and they will also help in stemming the distress migration. एक state से दूसरे state जा रहे हैं लोग because of the distress in agriculture. Now, from the value addition, processing, end-to-end management, input, output management to marketing, FPOs can help in fulfilling the target of doubling farmer income by 2022. अब तो ये टारगेट ही बेचारा छोड़ दिया हमने, बट टू एन एक्सटेंट जितना हो हेल्प कर सकता है. FPOs face the challenge with respect to community mobilization, effective decision making, governance, promoting agency efficiency, and access to capital. आज भी ये वाले challenges FPOs के साथ हैं. Collectivization ecosystem in the country needs to be professionalized, जो aggregates करने हैं food के हर level पे. The new tailored capacity building support and seamless access to finance, ये सब चाहिए होगा. Potential alternative financing structures such as guarantee fund, result-based finance, insurance structures to facilitate capital infusion into FPOs need to be explored. An FPO diagnostics and credit rating mechanism can encourage financiers to unlock credit flow. तो अभी इनके लिए credit rating नहीं आई है. Self-regulatory bodies such as microfinance institution network designed to protect the interest of FPOs and farmers is also needed. So all these are the basic things that we can take up. फिर एक पुराना क्वेश्चन है, green revolution and consequent increase in agriculture produce has worked to the disadvantage of farmers, critically unlike. ग्रीन रेवोल्यूशन ने दो तीन तरह के डिस्पैरिटीज क्रिएट की. पहला तो डिस्पैरिटी है फूड डिस्पैरिटी. फूड डिस्पैरिटी कैसे क्रिएट किया? इन द टर्म्स ऑफ राइस वीट साइकिल, और बाकी डाइवर्सिफिकेशन उससे हर्ट होता है. दूसरा डाइवर्सिटी है रीजनल डिस्पैरिटी. तो कुछ पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ने तो ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया और उसको अंदर फायदा भी कमाया. लेकिन ईस्टर्न स्टेट्स ने, सदर्न स्टेट्स ने इसको ज्यादा अडेप्ट नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर डिस्पैरिटी आई, जिसकी वजह से आज ये भी पता है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं वो ईस्ट में ज्यादा है, डेवलपमेंटल इश्यूज रहे वहां पे. तीसरा जो इन्होंने डिस्पैरिटी क्रिएट किया, दैट इज फार्मर्स डिस्पैरिटी. तो पुअर एंड रिच फार्मर्स के बीच में और ज्यादा गैप आना शुरू हो गया. जो रिच फार्मर्स थे, दे वर एबल टू अफोर्ड कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग दैट वाज देयर इन ग्रीन रेवोल्यूशन, ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते थे, तो इस वजह से वो और ज्यादा फायदे में रहे. सब्सिडीज भी एक तरह उन्हीं के लिए फायदेमंद होती हैं जो पे कर पाए, है ना, वही सब्सिडी भी ले पाएगा. तो इस वजह से रिच फार्मर्स गॉट रिचर एंड पुअर वर नॉट मच हेल्प्ड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन. इवन जो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह का जो सारा सिस्टम था, उसको साइड में ही रख दिया गया, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग ऑन अ हायर स्केल. लैंड रिफॉर्म वाज दी अदर वे अराउंड. उसमें बड़े फार्म्स को एक सीलिंग लगा के फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन इससे उल्टा ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमें ज्यादा से ज्यादा बड़े फार्मर्स, बड़े फार्म साइजेस चाहिए थे. तो वो पूरा लैंड रिफॉर्म का चैप्टर ही क्लोज कर दिया गया इन टर्म्स ऑफ redistribution after green revolution was launched. तो ये तीन मेजर इश्यूज हैं या डिसएडवांटेजेस हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं. ऑफ कोर्स इसके अलावा अगर एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के लेवल पे देखूं तो वहां पे केमिकल फार्मिंग की वजह से प्रॉब्लम आया, केमिकल बेस्ड फार्मिंग इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल. फिर अगर वाटर स्ट्रेस के हिसाब से देखूं तो उधर water guzzling plants like rice, they were promoted, and that creates trouble at the water level, irrigation levels. फिर अगर एक और चीज यहाँ पे ऐड करूँ, हाई यील्डिंग वैरायटीज. तो हाई यील्डिंग वैरायटीज अपने आप में ठीक तो हैं, लेकिन like I said, they have a very high glycemic index, so they promoted health related problems such as obesity, blood sugar, blood pressure. All these lifestyle diseases are coming from high yielding varieties only, because the basic protein structure, the basic carbohydrate structure got changed in those plant varieties, and that created trouble. Then ये बायोलॉजिकल लेवल पे जो ट्रबल्स हैं वो ये. तो ये सारे डिसएडवांटेजेस ग्रीन रेवोल्यूशन के, ठीक है, तो यही सब इसके अंदर डिस्कस हुए. तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दी आंसर फॉर दिस. हाँ, एडवांटेजेस भी हैं, वो भी लिख दिए यहाँ. तो आपको कभी सिर्फ क्वेश्चन डिसएडवांटेज पूछ रहा है तो आपने सिर्फ वो नहीं बता देना, बाकी चीजें भी बतानी. फूड सिक्योरिटी आ गया एटलीस्ट.
तो जो मेन कंसर्न था, फिर रूरल डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे लोग पॉवर्टी से बाहर आए, और नई टेक्नोलॉजीज और मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर की पहचान बनी, और आज हम ये सारी प्रैक्टिस करते हैं और ज्यादा अडेप्टेशन कर सकते हैं, तो वो सब ग्रीन रेवोल्यूशन की देन। Now, what is biofortification and how it can help in realizing the objectives of National Nutrition Mission? So, biofortification basically means that we are trying to increase the nutritional quality of food or food crop. So, how do we do that? So, that is through agronomic practices, conventional plant breeding, or modern biotechnology. तीन तरीके से कर सकते हैं. Differs from conventional fortification in that biofortification aims to increase the nutrient levels in the crops during plant growth rather than through manual means during processing of the plants. अभी जैसे इंडिया में फोर्टिफाइड राइस आ रही है, लेकिन वो फोर्टिफाइड राइस में एक्स्ट्रा विटामिन ऐड किए जाते हैं बाहर से, वो राइस के अंदर से ही कुछ बायोलॉजिकल ग्रोथ के लेवल पे नहीं है, एक्स्ट्रा एडिशन है फोर्टिफाइड राइस के अंदर। ये फोर्टिफाइड मिल्क है, उसमें विटामिन ए एक्स्ट्रा ऐड करके डालते हैं। तो अगर आप वेरका का कोई पैकेट खरीदेंगे दूध का, तो उसके ऊपर F+ ऐसे एक निशान बना होगा, तो दैट मीन्स दैट इज बिन फोर्टिफाइड। ओके, तो हाउ वुड इट हेल्प? एसेंशियली देयर इज समथिंग कॉल्ड साइलेंट हंगर, तो उससे डील करने में हेल्प करता है। साइलेंट हंगर denotes the prevalence of lower nutrition within the children, although they are eating enough. So the mission aims to prevent and reduce the prevalence of stunting amongst children, so which is highly prevalent in India, and anemia among women. तो ये दो चीजें हैं जो इंडिया में मेजर ट्रबल्स हैं, तो इन दोनों के साथ हेल्प कर सकता है। तो दैट्स दैट एसेंशियली। What is the what is conservation agriculture? Discuss its advantages and the wake of climate change leading to soil degradation. So ये बहुत न्यूज में रहता है आजकल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, क्योंकि अलग अलग फॉर्म्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये सब है। So this is a set of soil management practices that minimize the disruption of the soil structure, composition, and natural biodiversity. So that is basically conservation agriculture. Proven the potential to improve crop yields while improving the long-term environmental and financial sustainability of farming. And it shares three core principles that are maintenance of permanent or semi-permanent soil cover, minimum soil disturbance through tillage, regular crop rotation to help combat various biotic constraints. एक ही तरह की फसल एक ही जमीन से बार बार लेंगे तो बायोटिक कंस्ट्रेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स ड्राइव कर रहा है सॉइल में। अगर चेंज करते रहेंगे तो एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश भी करते रहेंगे। सो दैट वे वी नीड टू वर्क अपॉन इट। नाउ CA uses or promotes where possible or needed various management practices listed below. So that is utilization of green manures or cover crops, no burning of crop residue, integrated disease and pest management, controlled or limited human or mechanical traffic over agricultural soils. So all this helps in conservation agriculture. And climate change leads to reduction in the potential of land to produce benefits from a particular land use under a specified form of land management, and is considered to be one of the major problems of the world in the recent time. So conservation agriculture can help in soil degradation by, one, checking soil erosion, enhancing organic matter, replenishing nutrients, protecting soil biota. तो बेसिक्स याद रखना, पूरा डिटेल्स वैसे ही आपके याद पढ़ने के समझने के लिए ज्यादा है। कंजर्व वाटर, सो ऑल आर दी बेसिक फैक्ट्स, क्योंकि 150-250 वर्ड में इतना ही लिख पाओगे, explanation नहीं लिख पाओगे, so be careful. Then examine the concept of cooperative farming in the light of the problem of land fragmentation in promoting the socio-economic welfare of the farmer. ये UPSC का previous year question है। तो कोऑपरेटिव मतलब मिल के फार्मिंग करना है। जैसे आप आजकल FPO की बात करते हो, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का ही एक न्यू अवतार है। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या हैं लैंड फ्रेगमेंटेशन को लेके? तो in India, the per capita average operational size of land holding is 1.33 hectares, which is far below the world average of 3.7 hectares per person. Further, land holding have shown a marginal decrease rather than increase from holding size that of a decade ago. तो मतलब अगले आने वाले 10 साल में और कम हो जाएगा। पॉपुलेशन में होने की वजह से डिवाइड होता रहता है ना विद इन फैमिली। So small and marginal holdings have adverse impact on
efficient farming, thereby impacting economic prosperity because investment limit हो जाती है. Difficulty in access to agriculture credit is prominent drawback of small farm holdings, क्योंकि थोड़ी सी जमीन है 1 हेक्टेयर, तो उसको क्या ही बैंक के साथ कोलैटरल देके और फिर लोन लेंगे उसके ऊपर. Producers with small holdings often face problems due to inefficiencies in transporting their produce, leading to increased dependence on middlemen. अब अगर वो 1 एकड़ की जमीन में से कितना तो वो फसल ले लेगा और फिर उसको अगर ट्रांसपोर्ट भी करने जाएगा तो कुछ खास फायदा नहीं है. Therefore, there is a loss of income which becomes middleman's commission. तो इसके लिए करने की जरूरत क्या है? First is economy of scale. तो cooperative farming can help in creating economy of scale. Let's say गांव के जितने फार्मर हैं सब cooperative farming करें, तो सीड, फर्टिलाइजर, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इरिगेशन, सारी चीजें including their transportation they can share and they can yield the economy of scale. Then marketable surplus, तो ये भी बढ़ जाएगा. कभी किसी की फील्ड से कम प्रोड्यूस होगा, कभी किसी की फील्ड से ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बट एसेंशियली अगर इकट्ठा काम करेंगे तो मार्केटेबल सरप्लस बना रहे और उसके बेसिस पे वो एक अपनी कलेक्टिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ रख सकते हैं. देन क्रेडिट वर्दीनेस, तो 1 एकड़ के अगेंस्ट लोन लेना मुश्किल है, लेकिन अगर पूरे जमीन पूरे गांव की 3,000-2,000 एकड़ जितनी भी जमीन है उसको इकट्ठा कर लिया जाए तो डेफिनेटली बेटर हो सकता है. क्रिटिसिज्म, इंडिया में कोऑपरेटिव फार्मिंग के इश्यूज क्या हैं? So it failed to make a frontal attack on prevailing inequality in the economic structure, as traditional status distinction of landowners, landless laborers, and sharecroppers are still being maintained. Mechanization of agriculture through cooperative farming will squeeze the scope of employment and is likely to make workers redundant in rural areas. बहुत सारी लेबर फ्री हो जाएगी जिनको आप एग्रीकल्चर लेबर में चाहे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो है. Cooperative farming is not the only method to raise agriculture productivity. There is alternatives such as HYV seeds, fertilizers, implements. तो इनसे भी productivity बढ़ाई जा सकती है. Even crop diversification to high value crops, HVCs, वो सबसे बेटर है. अगर आपके पास 1 एकड़ है तो उसके अंदर आप wheat rice लगाने की बजाय मशरूम फार्मिंग कर लो, वो तो सिलोज में स्टैक करके हो जाता है. और पंजाब में 2 किसान भाइयों की बड़ी अच्छी एग्जांपल है. उन्होंने 1 एकड़ जमीन से शुरू किया था, आज भी वो शायद 2 एकड़ में कल्टीवेशन करते हैं और 1.5-2 करोड़ रुपए के मशरूम बेच देते हैं साल में. इतनी टर्नओवर है, ह्यूज. और उसमें से उनका खर्चा मुश्किल से आता है 10-20 लाख रुपए. दैट इज द काइंड ऑफ प्रॉफिट दैट पीपल आर अर्निंग आउट ऑफ इट इफ दे नो हाउ टू मेक इट. तो वो मैकेनाइज्ड भी है, सफिशिएंटली लेबर भी उसमें है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी इतने पैसे कमा लेते हैं. सॉल्यूशन ऑफ दीज क्रिटिसिज्म्स, the members of cooperative society should be active and vigilant. Every member should exercise his or her rights and insist for transparency in operation, accountability of the executive members and fairness of activities. So पहले तो जो भी ऐसा cooperative society types बनाते हैं या cooperative बनाते हैं farmers का, तो उसमें काम करने का तरीका इस तरह से democratic होना चाहिए. Necessary to spread the movement as people's movement. People should not think it as a part of government or department of the government. तो लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए तभी कोऑपरेटिव्स ठीक से चल पाएंगे, नहीं तो उनको लगता रहता है कि ये तो बाबू लोग हैं, ये इनसे क्या डील करें. ठीक है. देन व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन? तो इस बार गवर्नमेंट का 2022 में बहुत इम्पैक्ट रहा इस चीज के ऊपर भी. हाउ कैन इट ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी करंटली फेस्ड इन द इंडिया फिशरी सेक्टर्स? So blue revolution is what? So it has the vision to achieve economic prosperity in the country and fish farmers, as well as contribute towards food and nutritional security through the potential utilization of water resources for fisheries development in a sustainable manner, keeping in view biosecurity and environmental concerns. So this is blue revolution. ये याद करना पड़ेगा मेंस के लिए. ठीक है. अब इंडिया के स्टैटिस्टिक्स क्या है उसमें वो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चैलेंजेस याद रखो. First is unsustainable fishing practices. So that is major problem because एक ही जगह पे ज्यादा फिशिंग है बजाय से कि spread out होने के. There are 90% of global marine fish stocks have either been fully exploited or overfished. So that leads to biological problems. Sustainability. Then there is low productivity. So inland fisheries and fish farming sector जो है उसकी productivity low है. In terms of per fisherman, per boat or per farm. In Norway, a fisherman per farm catches
250 kg per day, while in India it is just 4 to 5 kg. तो ये एक मेजर कंसर्न है इनलैंड फिशरीज के अंदर. सी बेस्ड तो फिर भी ठीक है. Lack of modern equipment. So marine capture fishery comprises largely of small fishermen who operate traditional boats, either non-motorized vessels or boats with a basic outboard motor. And these vessels cannot operate beyond near shore waters. बहुत दूर तक नहीं लेके जा सकते डीप सी में जहाँ पे ज्यादा फिश होने के चांस होंगे. While near shore coastal waters are highly overfished, the high value fish stock proliferates in the deep sea. जैसे बड़ी मछली है अगर तो उसको पकड़ने के लिए आपको गहरे समुद्र में जाना होगा, तो वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है सी शोर के पास पास. उसके लिए फिर जो प्रॉपर बिजनेसमैन टाइप ऑफ फिशरमैन है जिनके पास बड़ी बोट्स हैं वही जा सकते. Lack of variety. So limited number of species grown, mainly due to weak linkages between research and development and fish farms community, and high value species such as tuna cannot be caught by the fishermen who use traditional vessels. So इस वजह से आज भी ट्यूना का तो ज्यादातर इम्पोर्ट ही करते हैं इंडिया में, पैकेज्ड सील्ड. Now the blue revolution can overcome the challenges by using a two-pronged approach. First, क्या कर सकते हैं? Sustainable capture fishery to harness marine and inland water, and expanding the horizon of fish farming to inland coverage or increased coverage and increased productivity, species diversification, better market returns. Productivity of brackish waters. So coastal aquaculture has touched 10 to 12 metric ton per hectare. अभी हमारा productivity थोड़ा बढ़ गया लेकिन उतना भी नहीं है अभी. Then 30,000 hectares have been added to area under fish farming. So this is good for India. Introduction of cage culture. So lobsters और इन सब की farming के लिए cage culture चाहिए होता है. Then new national policy in marine fisheries. This talks of introducing deep sea fishing vessels and assisting fishing communities to convert their vessels and gear for waters beyond. Innovative practices, so such as recirculatory aquaculture system aims to realize the goal of more crop per drop. तो ये fish और crop, agricultural crop दोनों इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इससे जो yield है वो बढ़ जाता है. It is up to 3 metric ton per hectare. Then the investment of rupees 3,000 crore in the blue revolution is being supplemented through rupees 7,523 crore fisheries and aquaculture investment infrastructure development fund, and this will meet the capital investment requirement of the sector. So right now, in order to meet the ever increasing demand for animal protein, global fish production should touch somewhere like 196 million tons by 2025, but this is not happening. And it currently stands at 171 million tons. तो ये एक तरह से हमारे लिए prospects भी दिखाता है कि अगर हम बढ़ाएंगे fish production तो हमारा फायदा होगा. So far so good. समझ आ रहा है? Yes, sir. Okay. Just a moment. So what is integrated farming system, how it can help in tackling the farmers' distress? So IFS is an interdependent, interrelated, often interlocking production system based on few crops, animals, and related subsidiary enterprises in such a way that maximizes the utilization of nutrients of each system and minimizes the negative effect of environment. So that is integrated farming system. बहुत बार आपने देख लिया 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस में इसमें recently. The interrelated, interdependent, interlocking nature of IFS involves utilization of primary produce and secondary produce of one system as basic input for the other system, thus making them mutually integrated as whole. वो जैसे हम बोलते हैं ना mutually reinforcing virtuous cycle, तो एक चीज दूसरे के लिए use होती है like this. So how can it help in agriculture or in helping farmer distress or improving agricultural growth? एक ही चीज. First is utility byproducts. Second is maximizing yield, rejuvenation of systems of productivity. Then control the built up, reducing the use of chemical fertilizer, increasing natural resources or nutrients. So mitigation of negative impacts, effective tool for northeastern farmers जहाँ पे ज़्यादातर
हिली रीजन हैं और क्रॉप कल्टिवेशन मुश्किल है. So these are the basic things in IFS आपने पढ़ रखी हैं. What steps need to be taken to improve livestock productivity in India, and how does it help in ensuring doubling farmer income by 2022? चाहे अभी by 2022 ना पूछें, फिर भी doubling farmer income के ऊपर तो पूछ ही सकते हैं, increase farmer income पूछ सकते हैं. तो लाइवस्टॉक सेक्टर क्या है? बेसिक इकोनॉमिक सर्वे से इंफॉर्मेशन निकाला है. इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, किन पे इम्प्रूव करने की जरूरत है. देखिए, फीड एंड फॉडर, research and development, strengthening infrastructure and services, new technologies, conservation of animal biodiversity and animal health. इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं, ऑलरेडी यू नो. इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक लंबा लिस्ट है, बजट के अंदर भी लंबा लिस्ट है. So this can definitely increase farmers' income. How? First is resource potential. तो cattle population India में sufficient है. Boon for landless farmers, dairy subsector significance, diversification of income, employment throughout the year, and focus on women labor. तो सबके लिए डेटा यहाँ पे गिवन है. Please pick it up for your examination. Then what is examine water policy, national water policy of India, and discuss its potential for promoting water use efficiency in agriculture. तो 2012 की पॉलिसी है. अगर गवर्नमेंट के मन में कभी आ जाए कि पूछना है तो उसके साथ रिलेटेड ये क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन. व्हाट इज कार्बन फर्टिलाइजेशन, हाउ इट कैन इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल आउटपुट. तो ये कार्बन फर्टिलाइजेशन अभी न्यूज में आ रहा था दोबारा से. इट इज बेसिकली आर्टिफिशियल एनरिचमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर of greenhouses with carbon dioxide as an essential nutrient for plants and vegetables, and it's also known as carbon dioxide fertilization. So it is used to improve production levels both from a qualitative and quantitative point of view. जैसे हम अगर ज्यादा ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, वैसे प्लांट्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट में रहेंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है. So it is particularly suitable for cold climates and can be used for growing practically all types of vegetables and greenhouse fruits and ornamental plants. That's where you use it more. What it helps in, so increase in photosynthetic rate, increase in water use efficiency, plants grow faster, they distribute a greater proportion of photosynthate to the roots, so they become stronger. And the reproductive biomass growth as well as vegetative biomass growth is usually increased by elevated carbon dioxide. जैसे हमारी growth better होगी तो plants की भी होगी, like this. Reasons behind mounting arrears of sugar mills and distress in sugarcane farmers. तो ये sugar sector के ऊपर, जैसे ऊपर टी का था वैसे ये sugar sector का issue है. तो इधर क्या क्या issues आते हैं, just go through this. So generally we have something called high production costs and lower realization. शुगर केन फार्मर की कॉस्ट ज्यादा आ रही है लेकिन पैसे उतने नहीं मिल रहे उसको. मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया, तो जो मिल्स हैं उनके बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तो नजदीक नहीं होनी चाहिए उससे. तो इस वजह से मोनोपोली बन जाती है एक एरिया में अलग अलग मिल्स की. अनसर्टेन प्रोडक्शन आउटपुट, लो यील्ड ऑफ शुगर केन, शॉर्ट क्रशिंग सीजन 4 से 7 महीने, बाकी टाइम शुगर मिल्स फ्री रहती हैं. लो शुगर रिकवरी रेट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लॉस इन इंडिया. एंड इसके अलावा इसके सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस. एक तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस आते हैं, इसके साथ एसएपी भी ऐड हो जाता है, फिर एग्रीकल्चर के अंदर शुगर केन की प्राइसिंग होती है. लेट फार्मर्स हैव द फ्रीडम टू सेट टू एनी मिल दैट मे वांट टू पे मोर. तो अभी क्या है ना, एक मिल की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए जो अब बन रखी है. फार्मर शुड बी फ्री टू सेल शुगर केन टू एनी मिल दे प्रेफर. मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया शुड बी रिमूव्ड. Sector needs infusion of capital, but also policy measures and structural changes. States should migrate to the progressive revenue sharing formula to ensure farmers receive a share in profits. Production cost can also be reduced through proper utilization of byproducts of the industry. So all these things are being done. Then government should encourage ethanol production, and it will bring down the country's oil import bill and help in diversion of sucrose to ethanol and to balance out excess production in sugar. तो E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हमारा शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा अगर हम कर पाए तो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? कल हमने रिपोर्ट में से भी इसको पढ़ा था, तो उसी लेंस से ये भी एक क्वेश्चन है अगर आएगा तो. व्हाट पॉइंट्स डू यू नीड? देन व्हाट इज मेंट बाय पेरी अर्बन एग्रीकल्चर? So this is basically something that is surrounding the boundaries of cities throughout the world and includes products from crop and livestock agriculture, fisheries,
फॉरेस्ट्री सब जगह करेंगे क्या, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एज वेल एज इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री। क्या करेंगे ना, सिटी के आसपास ऐसे छोटे छोटे फार्मिंग और गार्डनिंग सिस्टम्स एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो दैट्स कॉल्ड पेरी अर्बन। एक तो है रूरल, एक अर्बन, और ये पेरी अर्बन जैसे चंडीगढ़ के आसपास छोटे छोटे गांव हैं, वहां पे ये सारे पेरी अर्बन एग्रीकल्चर करते हैं। इससे होता क्या, बेनिफिट क्या है, वन इज ग्रीन जोन्स अराउंड अर्बन एरियाज, सो ब्रीदिंग पॉकेट्स आर क्रिएटेड, रिडक्शन इन अर्बन हीट आइलैंड, लो नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि सिटीज पास में होती हैं, वहां पे सारा सामान बिक जाता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड बास्केट, रिस्ट्रिक्ट अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहां पे अर्बनाइजेशन उतना होना मुश्किल हो जाएगा। देन लैंड रिफॉर्म्स, कभी ना कभी एक क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है यूपीएससी में। So they are necessarily not the only tool to boost agriculture growth, but also to eradicate poverty in rural areas discussed. तो land reforms का significance क्या है, कैसे के चलते हैं, तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सारे स्टैटिक पॉइंट्स ही हैं इसके अंदर, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे काम किया, how it reduces poverty. Then agriculture sector is in India is critical for the consistent growth and food security perspective. तो significance of agriculture के ऊपर क्वेश्चन है essentially. तो उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, जो ऊपर आपने पढ़ा है वही सब यहाँ पे भी। इट्स जस्ट द सेम क्वेश्चन आंसर रिटन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। तो बेसिक पॉइंट्स अपने आपने यहाँ से तैयार करने। वैसे 2020 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जल शक्ति अभियान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। तो जो रिसेंट कोई ऐसा गवर्नमेंट लॉन्च करती है इनिशिएटिव, तो उस पर कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना। फिर एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री। तो already we have dealt with the newer questions, same things are here. ठीक है, अभी बाकी के सारे इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके अंदर, तो उसके एग्जैक्ट आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, एमएसपी के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं फॉर एग्जांपल, सो जस्ट गो थ्रू देम एंड दैट शुड बी इट। अब आप इनके अंदर जो नए क्वेश्चंस हैं, जो ऊपर के 4-5 क्वेश्चंस हैं अलग अलग मुद्दों के ऊपर, उनके आंसर्स लिख के देखिए और सबमिट कीजिए, देन लेट्स सी कि आपके पर्टिकुलर आंसर्स में हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली दिस पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, जो हमने पढ़ ली चीजें उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन। critically analyze the role of biotechnology in improving the condition of the farmers in India. Then discuss in what ways food processing industry can be a game changer for Indian agriculture. In pursuit of doubling farmer income, Indian agriculture policy must emphasize converting farmer into agripreneurs. So basically, intermediaries कम करो, farmers को खुद forward backward linkages handle करने दो. That's the basic meaning. Real challenge of India's food security is poor grain management rather than shortage of grain production. तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उनकी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस टू कन्वर्ट फार्मर्स इनटू एग्रीप्रेन्योर्स रिक्वायर्स व्हिच आर द फॉलोइंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिसिशन इरिगेशन, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ प्रिसिशन इरिगेशन इन इंडिया, जो आजकल लेजर लेवलर और ये सभी हम यूज कर रहे हैं, आईटी इन इरिगेशन, उसके बारे में है। Despite having several measures to reduce the vulnerability of farmers in India, the farmer sector and the farmers continue to suffer from losses. तो कैसे improve कर सकते हैं? Basically again forward backward linkages के ऊपर question है, ठीक है? Then shifting priority from land productivity to irrigation water productivity has its own set of challenges. तो per drop more crop उसके ऊपर workout है, क्योंकि लैंड तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, अब उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंक्रीज कर सकते हैं या वाटर प्रोडक्टिविटी। The awareness of the extent of malnutrition despite agriculture growth has led to need for coverage, converge agriculture and nutrition. तो जो अपने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का ऊपर पड़ा था फोर्टिफिकेशन के लेके, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी। आइडेंटिफाई द इश्यूज रिलेटेड टू स्टबल बर्निंग, अगर पूछ लिया तो हर साल ही स्टबल बर्निंग होती है, हर साल ही सब कुछ चलता है, ठीक है? So this is again a repeating issue in agriculture. So deal with the questions, try and write them in your own words. Set a timeline कि 20 क्वेश्चंस लिखने हैं 3 घंटे में, उस हिसाब से इसको लिखो। पढ़ने के बाद सारा पहले आर्टिकल सारे पढ़ लो, उसके बाद लिखो। दैट विल देन सी कि मेक यू सी कि आप लिख पा रहे हो या नहीं। मेन कंसर्न पता है क्या है, ये नहीं है कि आपको चीजें पता है या नहीं अभी के लिए। मेन कंसर्न ये है कि आप क्या ग्राउंड लेवल पे उस टाइम पे इन गिवन 3 आवर्स 20 क्वेश्चंस लिख लोगे या नहीं। तो एग्रीकल्चर में अब जितने क्वेश्चंस है ना, उनको लिख के देखो अपने हाथ से, पहले सारा पढ़ लो, पॉइंट सारे आपके पास दिमाग में आ गए, देन यू स्टार्ट राइटिंग देम।
दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और इकोनॉमी में तो और किसी चीज पे क्वेश्चन आंसर लिखो ना लिखो, एग्रीकल्चर पे लिखने बहुत जरूरी, क्योंकि आपके 50% मार्क्स ये हैंडल करेगा। अगर 120 नंबर का आ रहा है तो 60-70 नंबर का तो सीधा सीधा एग्रीकल्चर पे ही क्वेश्चन आ रहा है। अब आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है उस पर क्वेश्चन आंसर लिखने का, स्टार्ट विद दैट राइट अवे। कल हम इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्कआउट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू आस्क।